Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, the article that we have started is radical equations. And if I present you the recap of the previous lecture, we can see over here क्या क्या हमने किया था. मैंने आपको ये बताया था कि इसके 3 टाइप्स हैं. ठीक है, रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के नीचे होगा. और इस टाइप ऑफ इक्वेशंस की 3 फर्दर टाइप्स हैं. ये आपके सामने वो तीनों टाइप्स जो हमने इससे पहले डिस्कस की हैं. फर्स्ट टाइप में लीनियर एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, सेकेंड टाइप में भी लीनियर एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, बट द डिफरेंसेस ऑफ द रेडिकल साइन. फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल साइन सिर्फ एक तरफ है इक्वेशन की, और जो दूसरी टाइप है उसमें रेडिकल इक्वेशन दोनों साइड पर है. एंड द थर्ड साइड इज हैविंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, और उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म्स आपको नजर आ रही हैं. और इसमें भी रेडिकल साइन दोनों टर्म्स पर है, बट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन. तो अगर हम एक्सरसाइज 1.4 देखें तो देयर आर 5 क्वेश्चंस इंक्लूडेड. इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप 1 दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वी हैव सॉल्व्ड. आज हम ऑनवर्ड्स 7 और 8 दो टाइप्स पहले देखेंगे जो कि टाइप 2 से हैं, और टाइप 2 अगेन आप देखें लीनियर इक्वेशंस हैं, और उसके साथ हमने दोनों साइड पर रेडिकल साइंस देखेंगे. और उसके बाद 9 और 10 हम देखेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होंगे. इस सब के साथ आपने एक और चीज पढ़ी थी, दैट वाज एक्सट्रेनियस रूट्स. और ये वो रूट्स होते हैं जो, या वो वैल्यू ऑफ एक्स होती है जो इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती. राइट, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सोल्यूशन सेट में मेंशन नहीं करते. जस्ट ये मेंशन करते हैं कि दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज एन एक्सट्रेनियस रूट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये हम बस मेंशन नहीं करते, बस इतना सा लिखते हैं कि इट इज एन एक्सट्रेनियस रूट. ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप कर चुके हैं. ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हम इरेडिकेट करना चाहते हैं. ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं इसका, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तभी ये रेडिकल साइन खत्म होगा, लेकिन एकदम नहीं होगा. ये आप देखें कि 11 माइनस एक्स, पहले मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखती हूँ, और ये मैंने होल स्क्वायर इस साइड पे ले लिया, और ये मैंने होल स्क्वायर इस साइड पर ले लिया. अब इस साइड पर तो फौरन ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना. सो दैट्स वाई कि ये फौरन नहीं इरेडिकेट होगा. ये कैसे ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह ओपन होगा. तो जब ये इस तरह ओपन होगा तो इसमें फिर क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, a स्क्वायर, a इज दिस, इसका स्क्वायर आ गया, b इज दिस, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस एंड माइनस 2a इंटू b. राइट, ये a इंटू b, ये 2ab का एक्सप्रेशन हो गया. ना भी हम इसे ब्रैकेट में रखें तो इट्स इनफ, इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 27 माइनस एक्स रह गया. ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल. अब जो लेफ्ट ओवर टर्म्स हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट विल बिकम 66 माइनस 11x आएगा, और फिर यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x भी आएगा, विच इन टोटल विल बिकम माइनस 17x. और जब ये माइनस x और माइनस x ये मल्टीप्लाई होंगे तो वी विल गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ x स्क्वायर एंड ऑल अंडर द रूट. अभी इसमें क्योंकि ये a और b की टर्म्स हैं, ये a और b, इसलिए ये स्क्वायर रूट अभी खत्म नहीं हो सकता यहाँ से. अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज 17 माइनस 2x माइनस 2, और ये सब एक्सप्रेशन अभी ऐसे ही रहेगा. यहाँ पर 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसके अंदर जो रेडिकल वाला एक्सप्रेशन है, वी विल कीप इट ऑन वन साइड एंड वी विल शिफ्ट ऑल अदर थिंग्स ऑन द अदर साइड. तो हमारे पास ये जो 17 और माइनस 2x हैं, दे विल बी शिफ्टेड ऑन द अदर साइड, एंड व्हेन आई विल शिफ्ट दिस, it will become, the expression will be
the expression that is left on the left hand side is this one. इसको हमने इधर ही छोड़ दिया रेडिकल वाले साइन को, और 27 माइनस एक्स ऑलरेडी राइट साइड पे, इधर हम 17 शिफ्ट कर दिया और माइनस 2x को भी शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया प्लस 2x। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -2 ये एज इट इज है फिलहाल, एंड ऑन दिस साइड वी हैव 27, 2x minus x बन जाएगा, and 27 minus 17 plus 10 बन जाएगा। Now again we want to eradicate this square root, so we have to square on both sides. We have to do it, right? Because अभी भी जो है वो square इसके अंदर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम square करते हैं both sides पर। ये अब हमने square कर लिया, और square आने के बाद अब इसके जो expressions आएंगे फाइनल आंसर, अब तो ये कैंसिल हो गया ना। अब ये -2 का भी स्क्वायर होगा और इस सारे का भी स्क्वायर होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और -2 का स्क्वायर जो है वो मिलके क्या बन जाएगा 4, और इनसाइड ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर हमारे पास आ जाएगा। इस तरफ ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x, what we have applied a plus b whole square। अब स्टिल हम इसको सारा हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये मल्टीप्लाई होकर 264 बना, ये बना 68x और ये बना 4x स्क्वायर। ये सारी टर्म्स हम इधर शिफ्ट करते हैं, -x स्क्वायर -100 -20x, एंड ऑन द राइट साइड वी कीप जस्ट अ 0, सो दैट के हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। अब बनती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म 3x स्क्वायर, ठीक है, and -68 and -20 will become -88x, and plus 264 and -100 becomes 164, and this is equal to the standard form of the quadratic equation, right? This is the standard form of quadratic equation, जिसको अब हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं by just applying a quadratic formula -b plus -b square minus 4ac under the root over 2a, okay? From here we can see that b is 88, so it becomes 88 plus minus 88 square minus 4, a is 3 and c is 164, all this under the root, over 2a is 6, and when we solve it, it becomes 88 plus minus 7744 minus 1968. After computation you will get these values, and after subtraction you will get 5776 under the root over 6. If you want to ask something, you may raise your hand. 88, yes Saliha, मैम b -88 नहीं है, तो इसकी वजह से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। Here you can see a minus, इसकी वजह से माइनस और माइनस मिलकर क्या हुए प्लस, राइट, ओके। 5776 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वो आ जाएगा 76 over 6, राइट। इसके अब दो केसेस बन गए, जैसे हमें साफ नजर आ रहा है कि one is 88 plus 76 and the other is 88 minus 76, तो इस तरह दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, 88 plus 76 by 6 and the other is 88 minus 76 by 6। इससे हमारे पास आंसर आता है इसका 164 by 6, जिसको हम रिड्यूस करें तो 82 by 3 बनता है, और इससे सॉल्व करें तो ये बनता है 12 by 6, जिसको हम सॉल्व करें तो, so we have got two values of x, but as we know that we have to check this, we have to check this. Please mute yourselves, please mute, check, we have to check this. What was the original equation? It was 11 minus x minus 6 minus x, right? ये था left hand side, and what is the right hand side is 27 minus x. I will first put 82 by 3, right? Put 82 by 3 here. We are just checking that will this value satisfy the equation or not.
33 minus 82 by 3, all under the root. Then we have 18 minus 82 by 3, all under the root. Now after simplification, we will have minus 49 over 3 and minus 64 over 3. This becomes 7 iota by under root 3, and this becomes 8 iota by under root 3, which becomes minus iota by under root 3. This is the final answer of left hand side. So let's see what is the answer of right hand side by putting x is equal to 82 by 3. Here we have substituted the value, and now it will become 81 minus 82 by 3, which will become minus 1. It will become minus 1 by under root 3. And we know what I am applying, minus 1 under the root, that you already know. Okay, ये apply हो रहा है iota के लिए. Minus 1 under the root, we know that it becomes iota, right? Iota by under root 3. So this is the final value of right hand side. So we have seen that left hand side is not equal to the right hand side by putting the value of x is equal to 82 by 3. So 82 by 3 will be declared as extraneous, right? Now what was the other value? That was 2, right? Now we will check for x is equal to 2. Again we will put the value x is equal to 2 in left hand side as well as in right hand side, and we will see what happens. So what is the left hand side is 11 minus x under the root minus 6 minus x under the root, and the right hand side is 27 minus x. दोनों को हमेशा अलग रखें. इट्स अ टिप, ठीक है, नॉट अ रूल, इट्स जस्ट अ टिप, सो दैट कि आप जल्दी में फिर चीजों को ट्रांसपोज करना शुरू कर देते हैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो आप ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाते कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. सो आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 2 नाउ, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल टू सी के ये कंप्यूटेशन बहुत ही आसान है. इट बिकम्स इक्वल टू 1, राइट? So I'm putting x is equal to 2 in the right hand side, and it becomes 25 under the root and 5. So we can see that 1 is not equal to 5. So we can see that left hand side is not equal to right hand side. So 2 is also an extraneous root, right? Both the roots are not satisfying the equation. So the solution set will become empty. So as both the roots, they have not satisfied the equation, original equation, so our solution set will be empty. This was question number 7, right? And now we will move towards question number 8. The very same pattern, right? Type 2 है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों साइड पर रेडिकल साइन है. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे. minus a minus x under the root square on both this side and under root a square on this side also. This will become a minus b whole square, which will be opened like a square plus b square minus 2ab, right? So it will become 4a plus x under the root and whole square minus a minus x under the root and whole square, sorry, plus, and minus 2 into a into b, 4a plus x into a minus x under the root. And on the other side, this is cancelled with it and a, we are left with a, and ये भी cancel हो गई और हमारे पास expression simplify होकर 4a plus x plus a minus x minus 2, ये सारे expressions हम multiply कर लेंगे. It will become, because it's a product, 4a square और यहाँ से आया minus 4ax, ठीक है, और plus ax. So it will become minus 3ax and x and minus x. They will be multiplied to yield minus x square.
and on the other side we have a. Again, we have a radical expression. So again, we need to solve it further by taking square on both sides. Initially देखते हैं अभी किस stage तक हम आए. It is 5a and x is cancelled, -2, और ये सारा expression as it is equal to b. अब इस expression को हम इधर ही रखते हैं. 4a square minus 3ax minus x square वाली expression को हम इधर ही रख रहे हैं, right? और हम क्या कर रहे हैं कि ये a और ये -5a इसको हम यहाँ पे shift कर रहे हैं. So it becomes -2 4a square minus 3ax minus x square, and on the other side we have -4a, right? So we can cancel this minus with this minus, right? And we will now take square on both sides. Here I'm taking square on both sides, squaring both sides, right? So this will become, इसका भी स्क्वायर हुआ ना, 2 का भी स्क्वायर हुआ और इस सारे का भी स्क्वायर हुआ, तो ये बन जाएगा 4 into 4a square minus 3ax minus x square is equal to 16a square. And it will become 16a square minus 12ax minus 4x square is equal to 16a square. Now 16a square is cancelled, it is on both sides. And here we are left with the expression which is having -4 again common and x also, right? So inside we have 3a plus x is equal to 0. So it means there are two cases, either -4x is 0, which will imply that x is equal to 0, and the other case is that, or 3a plus x is 0, which will imply that x is equal to -3a. So now we have got two values of x, which we need to check first, and then we can declare them as a part of our solution set. So I'll be taking these two values and I'll be putting these in the left hand side, in the right hand side, turn by turn, and then we will see what happens. Either they are included in the solution set or not. So what is the left hand side of our question? It is 4a plus x under the root and minus a minus x. I'm writing left hand side over here and I'm writing right hand side, which is only under root a. We do not need to solve it, right? It is already solved, there is no x. So what we are going to put, we are first putting x is equal to 0. So 4a and x is 0 minus a minus 0. It will become 4a under root only, and it will become a under root only. 4 when comes out, it becomes this, and this under root a remains as it is. 2 minus 1. It is now 1 under root a. Okay, I'm doing 2 minus 1. It is like 2 minus 1 under root a. So we can simply write it as under root a. And our right hand side is already, it is already under root a. So we have got the same values. So left hand side is equal to right hand side. So the value of x, which is 0, is acceptable. We will include it in our final solution, right? Now I'm going to check x is equal to minus a. Okay? So x is equal to minus a को अब हम left hand side और right hand side में substitute करते हैं. Put x is equal to minus a, and left hand side is 4a plus x minus a minus x, and we have to write the right hand side also. Now 4a minus 3a minus a, now this is minus x and this is minus 3a, so it will become plus 3. Yeah, minus minus दोनों plus हो गए. So it is a and it is 4a. So a minus 2 under root a. ये कैसे बनता है? 4b और a भी आपने अलग अलग किया, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से a आ गया. तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर रहे हैं. अब
this is 1a and this is minus 2 under root a. 1 under root a and minus 2 under root a will become minus 1 time under root a, or we can simply say minus under root a, right? So we can very easily see that they are not equal. They are not equal. This is the answer of left hand side and this is the right hand side. So what can we say? That left hand side is not equal to right hand side by putting x is equal to minus 3a. So our minus 3a is extraneous root. So our solution set will only include the value which was satisfied, and that value was, what was that? X is equal to 0, right? Sorry. So X solution set will be written like this. Solution set will include 0 only, and minus 3a is extraneous root. This is the final answer that you will declare at the end. I hope it is clear. If you have any problem, any question, you may ask by raising your hand. Otherwise, I'll be moving towards next question. This was number 8 and now type 3, question 10 और 11. ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है. दोनों में आप देख रहे हैं सेम टाइप है. टाइप कैसे आइडेंटिफाई हो रही है? एक्स स्क्वायर से, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से. तो क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 11 करवा दूँ. ओके, इनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है? वो ये कि इसके अंदर जो सेम एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप उन एक्सप्रेशंस को इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें वी विल बी हैविंग सम सेम एक्सप्रेशन जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है. इफ वी आर हैविंग सम सेम एक्सप्रेशन तो हम उससे पूरा फायदा उठाएंगे और हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे. जैसे इस वक्त हम कर सकते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y. तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से जो x4 अपीयर होने वाला है वो नहीं अपीयर होगा, बल्कि y को y से अपीयर मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर अपीयर हो जाएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बाय क्वाड्रेटिक में जाने की बजाय सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही रहेगा और इस तरह हम इसको रिड्यूस करके और आसानी से सॉल्व कर लेंगे. So I have substituted this much expression as y, right? So it has become y, and this much expression again y, so it has become y plus 4. The rest is the same. Now अब आप देखें तो ये टाइप 2 में चला गया है क्वेश्चन, ठीक है, और हम सीख चुके हैं कि टाइप 2 को हम कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं. We take square on both sides initially, and by taking square initially it becomes y plus 9 under the root whole square, y plus 4 under the root whole square, a square plus b square हो गया, और 2a and b, right? और on the other side it is 25. ये सब कैंसिल हो गए and it is y plus 9 plus y plus 4 plus 2. The product is y square plus 13y plus 36. It's very easy to see it, how it directly can be written. So it becomes 2y plus 13 plus 2 or same expression and 25. We just want to keep the radical on one side and all the other expressions on the other side. So we will shift everything on the other side. Every expression is shifted over here, minus 13. So this becomes y square plus 13y plus 36 is equal to minus 2y plus 12. Right. So by further simplifying, we will further simplify it and it will become we need to take one more square, right?
over here we can see take square on this side as well as on this side. It will become 4. ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन ये इस पर भी आया, इस वजह से ये 4 भी यहाँ पर अपीयर हुआ. y square plus 13y plus 36 is equal to 4y square plus 144 minus 12 to the 4 and 24 and 24 to the 48. और ये कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? माइनस a माइनस b का. So it will become minus 40 minus 48. Minus 48y. ठीक है, ये कैसे हुआ है जी? ये a माइनस b होल स्क्वायर ये अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला. फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4y स्क्वायर प्लस 52y और प्लस 144 आ जाएगा ये, और ये सब एज इट इज माइनस 48y. इसको हम फर्दर, अब आप देख रहे हैं 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है, ये कैंसिल हो गए और बाकी एक्सप्रेशन क्या बचा है? 52y. इधर से हम ये 48y इधर शिफ्ट करते हैं. 144 भी कैंसिल हो रहा है. ठीक है, we just have a simple 0. 100y is equal to 0 means y is equal to 0. ठीक है, so y हमने किसके इक्वल लिया था? Our y was x square plus 3x, right? So we will again decode it and we will put y is equal to, क्योंकि हमें आंसर तो x में चाहिए ना, y तो हमारा खुद का इंट्रोड्यूस करता है. So x square plus 3x is equal to 0 it means. क्यों? क्योंकि y जो है वो x square plus 3x के इक्वल था. x is common and x plus 3 फैक्टर्स बन गए, जिससे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई. वन इज 0 एंड द अदर इज -3. सो ये दो वैल्यूज हैं जो अब हम बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर. -3 एंड चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ फॉर दिस स्टेप ऑफ चेक. आवर लेफ्ट हैंड साइड इज x square plus 3x plus 8 under the root plus x square plus 3x plus 2 under the root is equal to 3 है, तो उसको हम राइट हैंड साइड के तौर पर यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3. ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड. क्या पुट करना है? पहले हमने 0 पुट करना है. जी मैम वहाँ 8 की जगह 9 नहीं आएगा चेक में? आपने क्वेश्चन नंबर 10 का लिख दिया. नंबर 8 का मेंशन कर दिया. ओके, थैंक यू बेटा. यहाँ 9 और जी 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 जी. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है यहाँ पर. सिलेक्ट नहीं होगा. ओके, थैंक यू आयशा. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 4, और राइट हैंड साइड पर है यहाँ पर 5. We'll remove this 3. It is not 3. It is in fact 5. Right.
कि आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 0 नाउ। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ 9 बचा। ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ √4 बचा। यहाँ पे √9, यहाँ पे √4, तो ये बचा 3 + 2 which is 5. So left hand side is equal to right hand side. Both are equal to 5. Now I will put -3. -3 जब हमने पुट किया है तो ये -3 जब यहाँ पुट हुआ x² में तो ये बन जाएगा 9, और यहाँ जब -3 पुट होगा तो 3 × -3 -9 हो जाएगा, और ये +9 as it is. Then x² अगेन 9 बन जाएगा, +3x -9 बन जाएगा, और +4 ही रहेगा। ये कैंसिल, और √9 जो है वो 3 बन गया, ये कैंसिल, और √4 2 बन गया, and it is 5, which is again equal to the right hand side which is 5, right? So दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो गई. So we will declare our solution set as 0 and -3. Both are included in the solution set. ये हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. कोई प्रॉब्लम है तो जरूर साथ साथ पूछते रहें, बल्कि अब टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया, तो क्लास किसी भी वक्त स्टॉप हो जाएगी. बहरहाल चले, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के भी हिंट्स देती हूँ, स्टार्ट करवाती हूँ, वो आप खुद कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी सेम. एक्सप्रेशन जो सेम है उसको जरा आइडेंटिफाई करते हैं. ये एक्सप्रेशन सेम है, आप याद रखें. ये जो टेक्निक है ये हमें क्वाड्रेटिक में अप्लाई करनी है. ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में हमारे अप्लाई हो रही है, तो हम दोनों में अप्लाई करेंगे. x² + 3x = y है, तो ये बन गया y + 8, और ये बन गया y + 2 = 3. टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ये बना y + 8 स्क्वायर प्लस y + 2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 × y + √8 y + 2 = 9. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये बना 2y + 10. ठीक है, हम दोनों को ऐड कर दिया, +2, और ये सारे मल्टीप्लाई होकर y² + 10y + 16 बन जाएंगे = 9. We will keep radical expression on this side, y² + 10y + 16. We will keep this on left side, and we will shift the other expressions on the right hand side. ये बना हमारे पास as it is यही, और ये बना -2y - 1. Again we need to take the square because it's a radical sign. Again by taking square we can do it like this. बोथ साइड्स पे आ गया. अब ये याद रखें हमेशा, ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, इट इज नाउ ऑफ द टाइप दिस. ठीक है, ये है, एंड इट इज एग्जैक्टली, ये सॉल्व जब करेंगे तो आप एग्जैक्टली इसको ऐसे सॉल्व करें, दोनों के साथ माइनस है, तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा. a + b होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस जब आप कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही बन जाएगा. ये 2 पर भी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है और इस सारे पर भी हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया. y² + 10y + 16 और 4y² + 1 + 4y. ठीक है, आई टोल्ड यू कि ये प्लस की तरह ही डील होगा. elaborate it, expand it. 4y² + 40y + 64 - 4y² - 4y - 1 = 0. Trying to make it quadratic, अगर बनता है तो उसके बाद ये आ जाएगा 36y + 63 = 0. And by taking common from it, okay class, from here you can further solve it. ये आप यहाँ से कॉमन लें, y की एक वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो 4y + 7 = 0. तो y की वैल्यू आ रही है -7/4. दिस इज y ओनली, राइट. इस y को आप रखेंगे x² + 3x के इक्वल -7/4. यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो मैं आपको बता देती हूँ.
और उसको आप ऑब्टेन करें -3 प्लस माइनस √2/2, ये वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। इसको सॉल्यूशन सेट में डालना है या नहीं डालना, इसका फैसला होगा चेक के स्टेप से। जी, कोई क्वेश्चन है आपका?